Hello and welcome. Welcome to learning session number 6 of chapter number 9 of Science 1, which is carbon compounds. So far, what all have we seen? We have seen ionic and covalent bonds. What are ionic bonds? Bonds in which there is permanent transfer of electron from one atom to another atom. What are covalent bonds? Bonds in which electrons are shared between different atoms so that they can complete their last orbit is known as covalent bonds. Then we had seen dot structure where you show covalent bonds using dots for electrons, and we had seen line structure where you show the covalent bond between two electrons using a line. We had seen catenation, which is the property of carbon atom to form stable covalent bonds with itself and other elements, and because of which it can form large molecules, large compounds of carbon. And we had seen isomerism, where the molecular formula is the same but the structural formula are different. Okay, there are different options, different variety that you get. Then we had seen hydrocarbons and its types. We had seen alkanes, which has only single bonds, and it is known as saturated hydrocarbons. And we had seen alkenes and alkynes. Alkenes, it has at least one double bond, and alkynes has at least one triple bond, right? And alkenes and alkynes, whichever carbon compound has double bond or triple bond, is known as unsaturated hydrocarbon. Okay, only single bond, saturated hydrocarbon. Either one double bond or a single either one double bond or a triple bond, it is called as unsaturated hydrocarbon. Okay, and we are going to use this concept a lot today. Saturated versus unsaturated. Saturated matlab sirf single bond, unsaturated any double bond bhi ho sakta hai, triple bond bhi ho sakta hai. That you need to know for today's learning session. Then we had seen types of carbon compound based on arrangement of carbon atom. Okay, they could be in straight chain, they could be in branched chain, and they could be in the cyclic form, right? These were the three types of carbon compound based on arrangement of carbon atoms. Then we had seen functional groups in carbon compounds. For example, we had seen carboxylic acid, we had seen ketone, we had seen halogens, we had seen amine, etc. We had seen homologous series in which the functional group is same but the length of carbon chain keeps on increasing gradually. And we had seen IUPAC nomenclature. The steps for writing the name using IUPAC nomenclature were: first count the number of carbon atoms, then decide the parent name, then see the functional group, and then give the number to the functional group such that the number is the smallest number, right? These were the rules to write names using IUPAC nomenclature. Okay, the topics we're going to see today are chemical properties of carbon compounds. In that, we're going to see combustion, oxidation, addition, substitution. All of these we have already seen. We know what is combustion, we know what is oxidation, we know what is addition. Addition, you might be hearing this for the first time, but it is very similar to combination reactions we had seen in chapter number 3. And substitution reactions also you'll have seen so many times, right? So all of these we know. We are just going to see a few examples with respect to carbon compounds today. Okay. So our objective for today is going to be students will be able to explain with examples chemical properties of carbon. Which chemical properties you should be able to explain: combustion, oxidation, addition, and substitution. Okay. These are the words we're going to learn today: combustion, vicinity, endo, exo, thermic, LPG, ignited, alkaline, hydrogenation. This is a long word, right? Hydro, HYDRO, hydro. G is G, NATION is nation, right? Hydrogenation, 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 hydrogenation. Inert and reagents. Okay, यहाँ पे cut करो इस word को. RE is reagent, reagents. Okay, these are the new words we're going to learn today. So there's a can you recall type of question, very simple questions. Read all three questions and write down the answers in your notebook by yourself. Okay, I'm going to wait for 5 seconds for you to do that by yourself. Pause the video here in the next 5 seconds. Okay, I hope you pause the video and you're ready with the answers to all three questions. Question number 1. Which is the component of biogas that makes it useful as a fuel? What is biogas? Biogas is something, it's a gas that we make using waste, right? Waste को हम लोग एक बायोगैस प्लांट में डाल के we get biogas out of it, and वो बायोगैस को हम लोग जला के we can cook food, for example, right? So बायोगैस में ऐसा क्या होता है जिसको हम जला के after burning it we can use as fuel.
So the answer is it has methane gas. Okay, and methane we had seen it's a carbon compound CH4. So because there's methane in biogas, we can use it as a fuel. Okay. Next, which product is formed by combustion of elemental carbon? Combustion मतलब क्या? Combustion यानी जला देना. Okay, burning is called as combustion. So when you burn elemental carbon, okay, what is elemental carbon? सिर्फ carbon element होगा और उसको burn करोगे, what will you get? The answer is carbon dioxide. Okay, so whenever you burn carbon, whatever oxygen is there in the air, it is going to get combined with carbon and you're going to get carbon dioxide. Okay, one atom of carbon, two atoms of oxygen, you get carbon dioxide. Okay, last is the biogas combustion reaction endothermic or exothermic? Okay, so what is the meaning of endo means inside. Okay, and what is the meaning of exo means outside. Okay, endo means inside, exo means outside. Then thermic, what is the meaning of the word thermic means heat. Okay, thermal energy. What is thermal energy? It is heat energy, right? So thermic means heat. Okay, so endothermic मतलब क्या? Heat is being absorbed. Exothermic यानी heat is being given out. Okay, so biogas का जो combustion reaction है उसमें heat will it be absorbed or will it be given out? Combustion reaction, right? Biogas को हम जला रहे, combustion नहीं जलाना. So whenever you are heating something up, heat is going to be released, right? So very simple answer, it is exothermic. Okay, you're going to move ahead. So first we are looking at combustion. Okay, combustion, I told you what is the meaning of combustion. It is the meaning of combustion is burning. So hydrocarbons as well as most of carbon compounds undergoes combustion in presence of oxygen. Okay, हाइड्रोकार्बन्स और मेजॉरिटी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स को अगर तुम जला दोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी एयर आजू बाजू होना चाहिए. ओके, अगर एयर होगा तो एयर में ऑक्सीजन मिल जाएगा. एंड व्हेनेवर इट इज heated not heated, whenever it is burnt, you will it is going to emit heat बाहर निकलने वाला है. Second thing which is going to come out is light भी मिलने वाला है, and it is going to form carbon dioxide and water as common products. Okay, जब भी हाइड्रोकार्बन्स या फिर मेजॉरिटी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स को तुम लोग जलाने वाले हो, यू आर गोइंग टू emit heat and light. ये दो चीजें emit होने वाली है, और कौन से प्रोडक्ट्स फॉर्म होने वाले हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये प्रोडक्ट्स फॉर्म होने वाले हैं. ओके, दैट्स combustion. Let us see some examples. So if you heat carbon in the presence of oxygen in the air, then you're going to get carbon dioxide. You are going to get some heat. Exothermic होने वाला है, you're going to get some heat, or there is going to be some light. Obviously when it's burning, थोड़ा light is going to get thrown out, right? Whenever something is burning, light is given out. So hence they are writing here light as well. Similarly, कार्बन के बाद अगर मीथेन होगा, मीथेन किसमें होता है? बायोगैस में. So whenever you're burning biogas, this is the reaction which is taking place. Methane CH4 plus oxygen in the air. When you're burning it, you get carbon dioxide, water, heat, and light. Okay. Lastly, ethanol, methane, ethane. Ethanol यानी दो कार्बन atom. So one carbon atom, two carbon atom. That's why it is called ethanol. All मतलब alcohol add किया. So यहाँ पे OH add किया, right? So when you burn it in the presence of oxygen, you're going to get same to same प्रोडक्ट्स यू गेट. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिला था, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पे वाटर मिला था, यहाँ पे भी वाटर. यहाँ पे हीट, यहाँ पे हीट, यहाँ पे लाइट, यहाँ पे लाइट. सो सेम कॉमन प्रोडक्ट्स यू आर गोइंग टू गेट. द ओनली डिफरेंस इज हियर यू डोंट गेट वाटर, क्योंकि यहाँ पे देयर इज नो हाइड्रोजन, राइट? सिर्फ कार्बन है, इसलिए तुम्हें यहाँ पे वाटर नहीं मिलेगा. ऑल रिमेनिंग मेजॉरिटी हाइड्रोकार्बन्स एंड कार्बन कंपाउंड्स में यू गेट वाटर आल्सो एज द product. Okay, so that's it. There's nothing much about combustion. Okay, that's all you need to know. There's a use your brain power type of question which asks propane. What is propane? Methane, ethane, propane, right? Three carbon atoms, so C3. And propane, alkane का formula क्या है? Formula for alkanes, common formula for alkanes, CnH2n plus 2. So ये अगर तुम लोग का n है, 3n है, तो उसका डबल करो, 6 plus 2 8. So this is propane. Okay, ये दिए बिना तुम्हें propane का molecular formula लिखने आना चाहिए. So propane is C3H8, is one of the combustible component of LPG. What is LPG? LPG का full form कितने लोगों को पता है? I mean, I did not know. Okay, when I was making this PPT, I just googled what is the full form of LPG, and that is when I came to know. Okay, so LPG का full form है liquefied petroleum gas. Okay, so petroleum is in the form of gas. Okay,
बट इफ यू पुट लॉट ऑफ प्रेशर इन इट, बहुत ज्यादा प्रेशर करोगे तो गैस लिक्विड बन जाता है. Isn't it that we have studied in lower classes? Whenever lot of pressure is exerted on a gas, it converts into liquid, right? So जो तुम लोग के घर पे सिलेंडर आता है गैस का लाल कलर का, that is nothing but your LPG cylinder. Okay, so it has petroleum which is generally in gaseous form, gaseous state, but उसको प्रेशराइज करके उसको लिक्विड में किया ताकि बहुत बड़ा बॉक्स ना लगे, तो छोटे से सिलेंडर में बहुत ज्यादा पेट्रोलियम मिल जाता, राइट? So propane is one of the combustible component in LPG. So liquefied petroleum gas में propane भी होता है. Okay. So write down the reaction of propane. So when you're combusting, combustible यानी combustible यानी जो जल सकता है. Okay. So when you're burning propane, what is the reaction which is going to take place? I think with whatever you all know by now, you all should be able to write the reaction. Okay, try this by yourself. Sincerely pause the video here and try to write the reaction by yourself. Okay, and then you can cross check and rectify your mistake. I'll wait for 5 seconds for you to pause and solve the answer by yourself. Okay, I hope you have tried. It's okay if you're wrong. It's okay if you could not actually complete the reaction, but as long as you tried, it is going to lead to some improvement. Okay, so the answer is this. Okay, so you know, right? कोई भी हाइड्रोकार्बन या कार्बन कंपाउंड ले लो, it is always going to react with oxygen in the air when you are burning it. Combustion यानी burning, so it is going to react with oxygen in the air, and you're always going to get carbon dioxide, water, heat, and light. So if you remember these equations correctly, यहाँ पे कुछ भी रहने दो, मीथेन होने दो, इथेन होने दो, प्रोपेन होने दो, प्रोपेनॉल होने दो, majority 99% of the times you're going to get carbon dioxide, water, heat plus light. The same thing you're getting here: carbon dioxide, water, heat plus light. Okay, so that's all you need to remember in combustion. Okay, so you all should have been able to write this equation by yourself. Okay, generally saturated carbon compounds burn with clean blue flame. Okay, अगर तुम लोग सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स को जलाओगे तो जो फ्लेम का कलर होगा वो ब्लू कलर होगा, while unsaturated carbon compounds burn with yellow flame and release black smoke. Okay, again, what is saturated, what is unsaturated? I just revised that at the beginning, right? Saturated yani only single bonds, unsaturated yani they could have a double bond or a triple bond. Okay, so जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है जिसको सैचुरेटेड बोलते हैं, वो ब्लू कलर का फ्लेम मिलेगा जब उसको जलाओगे, और जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे जिसको अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बोलते हैं, उसमें येलो फ्लेम से वो बर्न होने वाला है, एंड यू विल आल्सो गेट ब्लैक स्मोक, ब्लैक कलर का स्मोक बाहर निकलने वाला है. ओके, this could be asked in objective type questions. Okay, so you'll need to remember this fact. Next, we are moving on to oxidation. Again, oxidation we already know. We know so many definitions of oxidation, right? First definition of oxidation is combining with oxygen. Second definition of oxidation is losing hydrogen. Third definition of oxidation is losing electrons. So three definitions we know for oxidation already from chapter number 3, chemical reactions and equations, right? So what is oxidation in case of carbon compounds? So carbon compounds start burning by combining with oxygen in the air when ignited in air. Ignited का मतलब क्या है? Ignited also means burning. Okay, so ignited also means burning. So ignited भी बोल सकते हैं, burning भी बोल सकते हैं, combustion भी बोल सकते हैं. So whenever you're igniting, whenever you're burning carbon compounds, it is combining with oxygen. We saw in the previous reactions also, right? Propane is combining with oxygen, right? Whenever something is combining with oxygen, we call it as an oxidation reaction. Okay, so in this process of combustion, all chemical bonds in the molecule of carbon compound break, and CO2 and H2O are formed as products. This we have already seen in detail while discussing the combustion process, right? Some chemical compounds are used as source of oxygen. Okay, source of oxygen यानी जिसमें से तुम लोग ऑक्सीजन तुम्हें मिल सकता है. Okay, so substances that give oxygen to other substances are called as oxidants or oxidizing agent, right? This also we have seen in detail in chapter number 3, chemical reactions and equations. What did we see? जिसकी वजह से oxidation reaction होता है, that is called oxidant or oxidizing agent. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जो ऑक्सीजन देता है, which is giving oxygen to other substances ताकि वो ऑक्सीजन के साथ combine हो जाए, those are called as oxidants or oxidizing agents. Okay,
So potassium permanganate or potassium dichromate are commonly used as oxidizing agent. So in the exam they could ask you as an objective question, give two examples of oxidizing agents. So your answer should be potassium permanganate and potassium dichromate are oxidizing agents. Okay. Oxidizing agent का मतलब क्या? Potassium permanganate or potassium dichromate will give oxygen to other substances during a chemical reaction. Okay. And oxidizing agents affect on certain functional groups in present in carbon compounds. Okay. Oxidizing agent कुछ कुछ functional groups पे ही reaction करता है. Okay. So there is this, try this given in your textbook. What is it saying? Take 2 to 3 ml of ethanol in a test tube. Okay, ethanol we know, methane, ethane. Ethane यानी दो कार्बन कंपाउंड्स, ऑल यानी अल्कोहल. तो दो कार्बन एटम्स के बाजू में जब अल्कोहल ऐड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज इथेनॉल. ओके, सो 2-3 ml लेने हैं एक टेस्ट ट्यूब में. ओके, सो वी टेक अ टेस्ट ट्यूब, वी पुट सम इथेनॉल इन. इथेनॉल लिक्विड फॉर्म में होता है. ओके, वी पुट सम इथेनॉल इन इट. ओके, देन add 5 ml of sodium carbonate solution to it. तो उसमें से थोड़ा सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन भी तुमने ऐड कर लिया. टेस्ट ट्यूब लिया, इथेनॉल ऐड किया, थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन ऐड किया, देन warm the mixture by holding the test tube on a burner for a while. Okay, so ये जो मिल गया तुम लोग को सोल्यूशन, अभी इसको तुम्हें बर्नर पे हीट करना. सो इट पुट इट ओवर अ बर्नर एंड you will start heating it. Okay, do drop wise addition of a dilute solution of potassium permanganate to warm the mixture with stirring. Okay, तो क्या करना है अभी, ये जो सोल्यूशन है इसको गर्म कर दिया हम लोग ने. अभी हम लोग को उसमें एक एक ड्रॉप कर करके you have to put potassium permanganate. और अभी हम लोग ने देखा है, what is potassium permanganate? It is an oxidizing agent. It is going to give oxygen for other substances. So हम लोग अभी एक एक ड्रॉप यहाँ पे डाल रहे हैं with stirring. Stirring मतलब क्या? मिक्स करते हुए. Okay. And they have asked a few questions. Does the typical pink color of potassium permanganate stay as it is on addition? Okay, it's a very difficult or very complex way to say such a thing. So potassium permanganate जो हम लोग एंड में ऐड कर रहे हैं वो पिंक कलर का होता है, राइट? व्हाट दे आर आस्किंग इज व्हेन यू आर एडिंग पिंक कलर पोटेशियम परमैंगनेट एंड यू आर स्टरिंग इट, तो उसका कलर सेम रह रहा है या चेंज हो रहा है? दैट्स व्हाट यू हैव टू check. Okay, I'm going to quickly revise what is going to happen in this experiment. You're going to take a test tube, उसमें थोड़ा सा इथेनॉल डाल दो, फिर सेम टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट डाल दो, देन यू हैव टू वार्म इट अप बाय हीटिंग इट ओवर अ बर्नर. फिर तुम लोग को पिंक कलर का जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो एक एक ड्रॉप उसमें डालना है एंड चेक करना है वो पिंक कलर को क्या हो रहा है, वो कलर चेंज हो रहा है या नहीं. सो लेट अस लुक एट व्हाट इज हैपनिंग with respect to this particular reaction when we actually try this out. Okay, so now keep observing. They have put potassium permanganate now in the test tube and now they are stirring it. Okay, इसको mix कर ले, stir करना है नहीं mix करना. So what you can see is slowly the pink color is disappearing and after some time the entire solution is colorless. पूरा colorless हो गया, right? Again a little potassium permanganate is added and stirred, वापस colorless हो गया. So what we are observing is पिंक कलर का जो पोटेशियम परमैंगनेट हम लोग इथेनॉल में ऐड कर रहे हैं तब उसका जो पिंक कलर है वो गायब होके कलरलेस बन रहा है. ओके, सो व्हाट इज द रिएक्शन व्हिच इज टेकिंग प्लेस ओवर हियर? दिस इज द रिएक्शन व्हिच इज टेकिंग प्लेस ओवर हियर. दिस इज इथेनॉल and you have alkaline KMnO4. KMnO4 is potassium permanganate. Okay, K is potassium, MnO4 is permanganate. Okay, so potassium permanganate. Alkaline, what is the meaning of alkaline? Alkaline यानी वो basic है. So you have studied acidic and basic, right? Acid का opposite होता है basic. So alkaline यानी ये KMnO4 acidic नहीं है, basic है. Okay, and we have seen potassium permanganate क्या है? Oxidizing agent. What is the meaning of oxidizing agent? It is going to give oxygen for some other substance. तो क्या हो रहा है यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन है ये निकल के ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे अटैच हो रहा है and that's how you are getting this ethanoic acid over here. Okay, so that was this experiment. Okay, so in the above, give me a minute. Yeah, so in the above activity ethanol gets oxidized by alkaline potassium permanganate to form ethanoic acid because ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है. इफ यू सी हियर यहाँ का जो ऑक्सीजन है यहाँ पे जाके कंबाइन हो रहा है इस कार्बन एटम को. सो जैसे ही ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है वी कॉल इट एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट? सो ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ whom
बिकॉज ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, जो अल्कलाइन है. ओके, अल्कलाइन यानी बेसिक है, एसिड का ऑपोजिट. Only certain bonds in the vicinity of the functional group take part in this reaction. तो vicinity ये word का मतलब क्या है? Vicinity यानी जो पास में है. Okay, so यहाँ पे functional group क्या है? OH. Okay, so OH के पास में ही generally reaction या फिर OH के आजू बाजू के जो atoms है उसके साथ ही react करने वाला है. Okay, generally that happens in case of potassium permanganate. Okay, so that's your second point. Another, try this. Okay, we are done with combustion, we are done with oxidation. We are moving on to the next one, and to understand the next chemical property of carbon compounds, we are again going to do a activity. Okay, we are going to do a try this. Great. So what we are doing, take 4 ml oil in a test tube and add 4 drops of tincture iodine और ब्रोमीन वाटर इन इट. ओके, तो एक टेस्ट ट्यूब ले लो और उस टेस्ट ट्यूब में तुम लोग क्या ऐड करने वाले हो? ऑयल ऐड करने वाले हो. कौन सा ऑयल ऐड करोगे? हियर दे हैव गिवन. ओके, वेजिटेबल ऑयल्स वी हैव टू टेक. तो कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हो, विच इज आल्सो अवेलेबल इन योर हाउस होल्ड. मोस्टली अवेलेबल होगा. सो टेस्ट ट्यूब ले लो, उसमें वेजिटेबल ऑयल ऐड कर दो. ओके, देन टिंक्चर आयोडीन ले सकते हो या फिर ब्रोमीन वाटर ले सकते हो. व्हाट इज इजी? ब्रोमीन वाटर इज मच मोर इजियर. सो हम लोग ब्रोमीन वाटर उसमें ऐड करने वाले हैं. ओके, व्हाट इज द कलर ऑफ ब्रोमीन? ब्रोमीन वाटर का कलर होता है डार्क, नॉट डार्क ब्राउन बट लाइट ब्राउन कलर होता है. ओके, सो ब्रोमीन वाटर का कलर होगा लाइट ब्राउन. देन व्हाट यू गोइंग टू डू इज शेक द टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब ले लिया, वेजिटेबल ऑयल डाल दिया, फिर ब्रोमीन वाटर डाल दिया. नाउ यू गोइंग टू शेक द टेस्ट ट्यूब. Find out whether the original color of bromine or iodine disappears or not. हमें क्या चेक करना है कि जो ओरिजिनल कलर है ब्रोमीन का वो गायब हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, नहीं गायब हो रहा है, नहीं गायब हो रहा है. ओके, एंड देन दे हैव आल्सो आस्क्ड अस टू रिपीट द सेम प्रोसीजर यूजिंग अदर ऑयल्स एंड वनस्पति घी. सो अपना इतना बजट है नहीं, हम लोग का सिर्फ एक वेजिटेबल ऑयल का बजट है, हम लोग बस एक ही बार एक्सपेरिमेंट करेंगे. ओके, बट इन दिस एक्टिविटी दे हैव आल्सो आस्क्ड अस टू डू दिस विद वनस्पति घी. Okay, let us see the experiment now. Okay, there you go. So here's the oil, and in that oil what they have added is bromine water, and now they're going to start shaking the bromine water in the test tube. And if you see, धीरे धीरे कलर जा रहा है, right? लाइट ब्राउन हो रहा है, and finally it is colorless now. अभी बिल्कुल भी कलर नहीं है उस solution का, right? If you want, we can see it one more time. This is the vegetable oil जिसमें bromine water add कर रहा है, and once they've added, they're going to shake it. Okay, and after shaking it for a long time, उसका कलर धीरे धीरे लाइट होने वाला है और फाइनली वो कलरलेस हो जाने वाला है. Okay, so that's your experiment with vegetable oil plus bromine water. Okay, let us move ahead. So what were your observations? The first observation should be the disappearing color of bromine indicates bromine is being used up. Okay, जब तुम vegetable oil में bromine add कर रहे हो, ब्रोमीन का कलर तो ब्राउन कलर है, बट वो ब्राउन कलर डिसअपियर हो रहा है. इसका मतलब क्या है? ब्रोमीन यूज हो रहा है, रिएक्शन में यूज हो रहा है, ब्रोमीन रिएक्ट कर रहा है. ओके, दैट्स योर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. नेक्स्ट, दिस मीन्स दैट ब्रोमीन हैज अंडरगॉन अ रिएक्शन विद द वेजिटेबल ऑयल. क्योंकि ब्रोमीन का कलर गायब हो रहा है, उसका मतलब ब्रोमीन यूज हो चुका है. और उस कैसे यूज हो गया? वेजिटेबल ऑयल के साथ रिएक्शन में यूज हो गया वो. ओके, नेक्स्ट, सो दिस इज कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन. ओके, when carbon compound combines with another compound to form a product that contain all the atoms of the both reactants is called as addition reaction. Okay, so काफी लंबा sentence है, but this is nothing but a combination reaction that again which you have studied in chapter number 3 chemical reactions and equations. उसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था? Combination reaction. What is the definition of combination reactions? When two or more reactants combine to form a single product, it is known as a combination reaction. So that the same thing is happening over here in the addition reaction. इसमें फर्क क्या है? यहाँ पे definition में carbon compound ये word use किया. Okay, so when a carbon compound combines with another compound to form a product, o यानी सिर्फ एक product form होगा और उस एक product में सारे atoms होंगे दोनों reactants के. जितने भी रिएक्टेंट्स में एटम्स थे सारे के सारे कंबाइन होकर उस एक ही प्रोडक्ट में आ जाएंगे. दैट इज कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन. ओके, सो दे हैव गिवन एन एक्टिविटी एंड इन दैट एक्टिविटी दे हैव गिवन यू द नेम्स ऑफ फ्यू एसिड्स. उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिए. व्हाट यू हैव टू फाइंड इज उसमें कितने डबल बॉन्ड्स है एंड वो आयोडीन को डीकलराइज करेगा.
सो पिछला जो एक्टिविटी हम लोग ने किया, जैसे ब्रोमीन वाटर ऐड किया, द सेम थिंग वुड हैव हैपेंड विद आयोडीन आल्सो। ओके, आयोडीन ऐड किया, फिर भी सेम रिजल्ट मिलने वाला है तुम लोग को। ओके, सो यहाँ पे आयोडीन भी लिख सकते हो, ब्रोमीन भी लिख सकते हो। सो व्हाट दे आर आस्किंग इज, अगर इसमें, ओके, इफ इन दिस यू ऐड ब्रोमीन और आयोडीन, कलर गायब होने वाला है, नहीं होने वाला है। डी कलराइज यानी कलर गायब हो जाना, ओके, कलरलेस बन जाना। दैट्स द मीनिंग ऑफ डी कलराइज, कलराइज का उल्टा। सो इसमें जब ब्रोमीन और आयोडीन ऐड करोगे तो कलर गायब होगा या नहीं होगा, इसमें ऐड करोगे तो कलर गायब होगा या नहीं होगा, इसमें ऐड करोगे तो कलर गायब होगा या नहीं होगा, दैट दे हैव आस्क्ड, okay, by asking you to fill this table. So I'm directly going to give you the answers. Okay, the names don't matter, the molecular formula also frankly does not matter. What matters is इसमें कितने कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स है। ओके, सो आई एम जस्ट गिविंग यू द आंसर। इस एसिड में देयर आर 0 डबल बॉन्ड्स। ओके, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स है। इसमें एक डबल बॉन्ड है, इसमें 0 डबल बॉन्ड्स, ऑल ऑफ देम आर सिंगल बॉन्ड्स, एंड लास्ट वाले में 2 डबल बॉन्ड्स है। देन उसमें से कौन से कलराइज हो जाएंगे, यानी किसके कलर गायब हो जाएंगे, कलरलेस बन जाएंगे। तो ये कलरलेस नहीं बनेगा, सेकेंड वाला कलरलेस बन जाएगा, थर्ड वाला कलरलेस नहीं बनेगा, फोर्थ वाला कलरलेस बन जाएगा। सो डू यू सी अ पैटर्न हियर, जब भी डबल बॉन्ड्स नहीं है देन कलरलेस नहीं होने वाला है वो, जैसे डबल बॉन्ड आ जाता है तब वो कलरलेस हो जाएगा। सो दैट्स द पैटर्न, दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू फ्रॉम दिस table. So whenever there's a double bond, then the decolorization is going to happen. तभी वो कलर गायब हो जाएगा। बट जब भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो कोई भी कलर गायब नहीं होने वाला। अगर पिंक कलर का पोटेशियम पर मैग्नेट, सॉरी, अगर ब्राउन कलर का ब्रोमीन तुम ऐड करोगे तो ब्राउन कलर ही रहेगा, वो ब्राउन कलर गायब नहीं हो जाएगा, तुम लोग कितना भी शेक कर लो। ओके, सो दैट्स आवर इन्फरेंस फ्रॉम हियर। सो अनसैचुरेटेड कंपाउंड, सो यहाँ पे इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, राइट? सो दिस इज सैचुरेटेड कंपाउंड। इसमें एक डबल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड हो गया, इसमें वापस कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड, तो सैचुरेटेड कंपाउंड हो गया। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स है तो अगेन ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया। ओके, सो unsaturated compounds contains a double or a triple bond as their functional group. So they undergo addition reaction to form a saturated compound as the product. Okay, तो जिसमें भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ओके, जो कोई भी अनसैचुरेटेड होगा, सिर्फ वही एडिशन रिएक्शन अंडरगो करेंगे, और एडिशन रिएक्शन के बाद जो मिल जाएगा वो सैचुरेटेड कंपाउंड हो जाएगा। तो जो डबल बॉन्ड है वो गायब होकर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। दैट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन एडिशन रिएक्शन, दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, आई एम गोइंग टू रिपीट दिस पॉइंट। अनसैचुरेटेड जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, सिर्फ वही लोग एडिशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं। ओके, एंड आफ्टर दे अंडरगो द एडिशन रिएक्शन यू आर गोइंग टू गेट सैचुरेटेड कंपाउंड। सो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो गया, इसका मतलब क्या है, जो डबल बॉन्ड है ये चेंज होकर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा आफ्टर द एडिशन रिएक्शन। ओके, so addition reaction of an unsaturated compound with iodine or bromine takes place instantaneously at room temperature. That ये हम लोग ने देखा है through that experiment। जैसे ब्रोमीन को हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ऐड कर रहे हैं, तभी के तभी बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाता है, एंड इट इज टेकिंग प्लेस एट रूम टेम्परेचर, उसको हीट भी नहीं करना पड़ता। सो रूम टेम्परेचर पे हो जाता है ये रिएक्शन। मोreover the color change can be felt by eyes, वो जो कलर चेंज हो रहा है बहुत इजीली आंखों से दिख जाता है। हेंस इस प्रॉपर्टी को एक इस प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। व्हाट इज द एप्लीकेशन? दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इन अ कार्बन कंपाउंड। ओके, सो अगर समझो तुम्हारे पास एक कार्बन कंपाउंड है, यू डोंट नो विच कार्बन कंपाउंड दैट इज, एंड यू हैव टू चेक इसमें ये सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। तो तुम क्या करोगे, उसमें ब्रोमीन वाटर ऐड करके उसको शेक कर दोगे। ब्रोमीन वाटर ऐड करने के बाद अगर उसका कलर गायब हो गया, it becomes colorless, then you know then you know that, give me a minute, then you know that it is a unsaturated carbon compound, right? एंड समझो उसमें अगर तुम लोग ने ब्रोमीन वाटर डाला बट कलर चेंज नहीं हुआ, इट मींस इट इज सैचुरेटेड, ऑलरेडी सैचुरेटेड था। ओके, सो इट इज अ टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इन द कार्बन कंपाउंड। कोई भी कार्बन कंपाउंड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स भी है, ये चेक करने के लिए हम लोग ये रिएक्शन यूज करता है, ये रिएक्शन यूज कर सकते हैं। विच रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन। ओके, ग्रेट। द रीजन आई हैव हाइलाइटेड दिस इन रेड इज अगेन आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं। ओके, अनदर क्वेश्चन फॉर एडिशन रिएक्शन। ओके, इन द अबव एक्टिविटी, यानी जिसमें वेजिटेबल ऑयल में हम लोग ने
ब्रोमीन वाटर डाला था उस एक्टिविटी में, द कलर ऑफ ब्रोमीन डिसअपियर्स इन द रिएक्शन बिटवीन ऑयल एंड ब्रोमीन. हाउएवर देयर इज नो चेंज, कलर चेंज इन वनस्पति घी. वनस्पति घी अगर तुम ले लोगे टेस्ट ट्यूब में और उसमें अगर तुम ब्रोमीन वाटर डाल के शेक करोगे उस टेस्ट ट्यूब को, द कलर इज नॉट गोइंग टू चेंज. द क्वेश्चन दे आर आस्किंग इज व्हाट इन्फरेंस विल यू ड्रॉ फ्रॉम दिस. इसमें से क्या कंक्लूजन निकलेगा? Which of the substances do contain a multiple bond? Okay, so I think you should be able to answer this by yourself. So I'll wait for 5 seconds for you to pause the video and form your answers in your mind. Okay. Okay, let us look at the answers. I don't know why I've written do not copy. Do copy this, okay? Copy this in your notebooks. By mistake, I've written here do not copy. Okay, so the answer is vegetable oils are unsaturated. Double yeah. Why have I written single bond? It's not single bond, okay? It should be triple bond. Okay, so what is your inference? Inference मतलब inference यानी conclusion. क्या conclusion है? Vegetable oils are unsaturated. Why are they unsaturated? क्योंकि vegetable oils का कलर गायब हो रहा है. कलर गायब हो रहा है यानी वो unsaturated से saturated बन रहा है. यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड्स बन रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट कंक्लूजन है कि वेजिटेबल ऑयल्स अनसैचुरेटेड है, यानी उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है. ओके, वनस्पति घी में जब ब्रोमीन वाटर ऐड कर रहे हैं तो उसका कलर चेंज नहीं हो रहा है. व्हेनेवर इट्स नॉट चेंजिंग इट मींस इट इज सैचुरेटेड. उसमें ऑलरेडी सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स थे, तो ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड से तो रिएक्शन होनी नहीं वाला. एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन तभी होता है जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स है और उनको सिंगल बॉन्ड्स बनाने के लिए एडिशन रिएक्शन यूज होता है. सो माय कंक्लूजंस आर vegetable oils are unsaturated whereas vanaspati ghee is saturated. Okay, and do copy these answers in your notebooks. Okay, the unsaturated compound can also undergo addition reaction with hydrogen. Okay, अब तक हम लोगों ने किसके साथ रिएक्शन देखा है? ब्रोमीन एंड आयोडीन के साथ रिएक्शन देखा है. बट अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं. कौन सा रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन. और बिकॉज ऑफ दैट एडिशन रिएक्शन सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा. ये जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है ये सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा व्हेन इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन. ओके, but it directly it cannot undergo that reaction. Okay, it needs catalyst. What is the meaning of catalyst? Again, this we had seen in chemical reactions and equation. What is the meaning of catalyst? Catalyst means it is a substance which does not take part in the reaction but वो reaction का speed increase या decrease कर देगा. Okay, I'm going to repeat what is catalyst. Catalyst ऐसा substance होता है which is not going to take part in the chemical reaction. Okay, it is not going to undergo chemical change, but वो जो रिएक्शन का स्पीड है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है. सो दैट्स द मीनिंग ऑफ कैटलिस्ट. तो अगर अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स को एडिशन रिएक्शन करना है हाइड्रोजन के साथ तो उसको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है. व्हाट आर द एग्जांपल्स? प्लैटिनम और निकल. कैन यूज प्लैटिनम और निकल एज द कैटलिस्ट. ओके, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट. हाइड्रोजनेशन मतलब क्या? इतना बड़ा वर्ड है, राइट? HYDRO हाइड्रो, G is J, NATION is nation. हाइड्रोजनेशन. सो हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करवाने को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन. ओके, आई एम गोइंग टू रिपीट दैट. व्हेनेवर रिएक्शन टेक्स प्लेस विद by reacting with hydrogen atoms, hydrogen molecules, it is known as hydrogenation. Okay, so hydrogenation of vegetable oils. So vegetable oils को जब तुम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाओगे in the presence of nickel catalyst, then an addition reaction is going to take place. This is how the reaction looks like. Okay, so here you can see two carbon atoms bonded to each other by double bonds. Okay, using double bonds. Now it does not matter what is on the left hand side of these carbon atoms, what is on the right hand side, ऊपर क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है. You don't really need to care about it. What you need to care about is there are two carbon atoms जिनके बीच में there is a double bond. Okay, so here you are reacting it with hydrogen gas. Why? Because it's hydrogenation process, right? जिसमें हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होने वाला है. And there is either platinum or nickel present. Generally we use nickel because nickel is much more cheaper. Platinum बहुत ज्यादा महंगा होता है, right? So that you don't want to use in such chemical reactions. So either you can use platinum or nickel. So what is going to happen is ये जो double bond है, ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बन जाएगा एंड ये जो दो हाइड्रोजन है यहाँ पे नीचे आ जाएंगे. ओके, दैट इज गोइंग टू हैपन. आई एम गोइंग टू रिपीट द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस रिएक्शन. ओके, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एंड निकल ये जो डबल बॉन्ड्स है ये टूट जाएंगे.
डबल बॉन्ड टूटने के बाद ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये सिंगल बॉन्ड बन गया तो कार्बन को लेफ्ट साइड से एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, राइट साइड से एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, बट इट नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको बस अभी 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। जब ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा तो इसको एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा, यहाँ के एक हाइड्रोजन से मिल जाएगा जो यहाँ पे चला जाएगा। सिमिलरली दिस कार्बन एटम ऑल्सो नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे लेफ्ट साइड में जब 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे थे लेफ्ट के कार्बन से, तब 4 मिल रहे थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। बट ये जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, we only get 3 electrons, left side से एक, ऊपर से एक, right side से एक, right? Now it needs one more electron that it will get from the second hydrogen here, जो यहाँ पे आ जाएगा। Okay, so this is the reaction for hydrogenation, the process of hydrogenation. Okay, so the molecules of vegetable oil contain long and unsaturated carbon compounds, carbon chains. Okay, so vegetable oil में जो molecule होगा वो बहुत लंबा होगा, and it will have many unsaturated carbon chains. Unsaturated यानी double bonds and triple bonds. Okay, hydrogenation transforms them into saturated chains and thereby वनस्पति घी is formed. Okay, so अगर vegetable oil के साथ तुम लोग hydrogenation कर दोगे तो जो unsaturated carbon chains है वो saturated बन जाएंगे। हाउ, यहाँ पे हम लोग ने देखा, राइट, यहाँ पे अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड यानी अनसैचुरेटेड, उसको सिंगल बॉन्ड बना रहा है यानी सैचुरेटेड बना रहा है, राइट। सो अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स विल बिकम सैचुरेटेड चेन्स। सो ये जो वेजिटेबल ऑयल है वो वनस्पति घी बन जाएगा, ओके, बाय हाइड्रोजनेशन। ऑल्सो वन इंटरेस्टिंग फैक्ट टू नो इज अनसैचुरेटेड फैट्स containing double bonds are healthy for us. Okay, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो हमारे लिए हेल्दी होता है, while saturated only single bonds they are harmful for us. Okay, again an important fact to know for objective type question. They could ask you this in objective. Unsaturated healthy होता है and saturated harmful होता है हमारी बॉडी के लिए। Okay, great. Last chemical property of carbon compound that we need to study is substitution reaction. Again, this we have seen in detail in chapter number 3, chemical reactions and equations. What is substitution reaction? When ions of two reactants are going to get exchanged. Okay, jab ions of two reactants are going to get exchanged, that we call as substitution reaction. Okay, so as single bonds between carbon and hydrogen एंड कार्बन कार्बन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, जब सिंगल बॉन्ड होता है दो कार्बन के बीच में, फिर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन के बीच में, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सो द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर नॉट रिएक्टिव। सो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है, वो इजीली रिएक्शन में पार्ट नहीं लेने वाले, एंड देयरफॉर दे रिमेन इनर्ट। इनर्ट मतलब क्या, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, दैट इज द मीनिंग ऑफ इनर्ट। सो इनर्ट गैसेस हमने पढ़ा था राइट, पीरियोडिक टेबल में, द राइट मोस्ट ग्रुप विच इज ग्रुप 18, राइट, नियॉन, argon, helium, all these are inert gases. Why do we call them as inert gases? क्योंकि वो लोग रिएक्ट नहीं करेंगे इजीली, उनका लास्ट ऑर्बिट ऑलरेडी कंप्लीट होता है, सो दे विल नेवर रिएक्ट विद एनीवन इजीली। सो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है वो लोग भी इजीली रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, सो दे विल रिमेन इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ most reagents. What is reagents? Reagents means it's a basically fancy word for reactant. In a chemical reaction, reactants react with each other to give you products, right? So ये जो reactants है उसका एक fancy word हो गया reagent. So reagent is a reactant which you add to some other substance. तो कोई भी reagent add कर दो saturated hydrocarbons में, वो तो inert ही रहेंगे, reaction नहीं करेंगे। However, एक केस है जहाँ पे बहुत easily reaction हो जाता है। कौन सा केस है वो? When saturated hydrocarbons are put in the presence of sunlight, वो क्लोरीन के साथ बहुत easily react करते हैं। Okay, I'm going to repeat that. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली रिएक्शन में पार्ट नहीं लेने वाले, बट जब सनलाइट में उसको क्लोरीन के साथ रख दोगे तो बहुत जल्दी जल्दी रिएक्शन होने वाला है। ओके, सो लेट अस सी द रिएक्शन। दिस इज हाउ द रिएक्शन लुक्स लाइक। ओके, सो CH4 मीथेन इज अ हाइड्रोकार्बन, you're adding chlorine gas to it in the presence of sunlight. So एक हाइड्रोजन निकल के एक क्लोरीन एटम ऐड हो जाएगा। सो एक क्लोरीन एटम यहाँ पे चला गया, यहाँ का जो एक हाइड्रोजन एटम है इसके साथ कंबाइन होके HCl बन गया। सो देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ एटम्स हैपनिंग, राइट। यहाँ का एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ जाके HCl बन गया, यहाँ का एक क्लोरीन एटम यहाँ पे जाके क्लोरोमीथेन बन गया, राइट। सो यहाँ से एक हाइड्रोजन राइट साइड में जा रहा है, यहाँ से एक क्लोरीन लेफ्ट साइड में जा रहा है। सो एक्सचेंज हो रहा है, सो इट्स अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अभी इस क्लोरोमीथेन के ऊपर और हम लोग ने अगर क्लोरीन पास किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सो यू विल गेट डाइक्लोरोमीथेन, दो क्लोरीन एटम, एक और हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और उसके यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा।
अभी CH2Cl2 इसके ऊपर और क्लोरीन गैस हम लोग ने पास किया, तो CH2Cl2 प्लस क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव राइज टू CHCl3, सो ट्राइक्लोरोमीथेन। ओके, 3 क्लोरीन एटम बचेंगे, बस एक ही हाइड्रोजन रह जाएगा। राइट साइड में HCl हमेशा कॉमन होगा, राइट। एक हाइड्रोजन जो यहाँ से निकल रहा है वो एक क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर हमेशा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही देगा, HCl। फाइनली ये जो CHCl3 उसको भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या मिलने वाला है, सारे के सारे हाइड्रोजन निकल जाएंगे यहाँ से। यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन था, वो भी निकल के फिर एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा, एंड यू विल ऑलवेज गेट HCl। सो दिस हाउ द रिएक्शन लुक्स लाइक व्हेन हाइड्रोकार्बन्स in the presence of sunlight are reacted with chlorine. Okay, so what is the definition of substitution reaction? You can use the definition of chapter number 3 also. You can use this definition also. So the reaction in which place of one type of atom or group in a reactant is taken by another atom or group of atoms is called as substitution reaction. Okay, तो already एक atom की जगह है, उस atom की जगह या फिर उस group of atoms की जगह को निकाल के कोई दूसरा atom या group of atoms आ रहा है, तो उसको substitution reaction बोलेंगे. Okay, great. Let us move ahead. So there's a use your brain power type of question. In the chlorination substitution reaction of propane of two isomeric products. Okay, let me read that again. In the chlorination substitution reaction of propane, two isomeric products containing one chlorine atom are obtained. Okay, जब भी प्रोपेन का क्लोरीनेशन होने वाला, क्लोरीनेशन हम लोग ने यहाँ पे देखा, राइट। व्हाट इज क्लोरीनेशन? व्हेन यू ऐड क्लोरीन टू अ हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट इज नोन एज क्लोरीनेशन। ओके, सो अभी क्लोरीनेशन किसका हो रहा है? प्रोपेन का क्लोरीनेशन हो रहा है। ओके, सो दो आइसोमरिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे। व्हाट इज आइसोमरिक? आइसोमरिक यानी जो आइसोमर्स होंगे। ओके, आइसोमर्स यानी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मॉलिक्यूल का फॉर्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चर अलग होगा। ओके, सो दो अलग अलग स्ट्रक्चर वाले प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। सो यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला and give their IUPAC names. Again, I think you all can solve this by yourself. Try to solve this by yourself sincerely by pausing the video here and drawing the structural formula and writing the IUPAC name in your notebooks. Okay, try it by yourself and then we'll see the correct answer. Okay, I hope you paused the video and have actually tried to solve this question by yourself. Now let us look at the answer. So first propane draw करना पड़ेगा क्योंकि propane का chlorination हो रहा है. So first let us draw propane. So this is how propane will look like. Methane, ethane, propane. So 1, 2, 3. 3 कार्बन एटम्स वाला प्रोपेन होगा। एन है मतलब एल्कीन है, तो सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे। ओके, देन यू हैव टू डू क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपेन। क्लोरीनेशन यानी यू ऐड क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या होने वाला है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस। वी हैव स्टडीड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कोई भी एक हाइड्रोजन निकल के क्लोरीन ऐड हो जाएगा। ओके, so there are two possibilities. The first possibility is ये वाला हाइड्रोजन निकल के एक क्लोरीन एटम आ जाएगा, सो यहाँ पे राइट साइड पे क्लोरीन एटम आ गया। या फिर दूसरा ये वाला हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, राइट। सो दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज। राइट साइड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो सेम रहने वाला है, बट दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज। ओके, ये लेफ्ट साइड भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, बट ये जो नेम होगा मॉलिक्यूल का वो सेम रहेगा, राइट। राइट साइड वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरोप्रोपेन, फर्स्ट कार्बन एटम पे। अगर राइट वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हम लोग लेफ्ट साइड से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू IUPAC नेमिंग सिस्टम यू शुड काउंट फ्रॉम आइदर लेफ्ट और राइट, डिपेंडिंग कौन से काउंटिंग में सबसे छोटा नंबर आ रहा है। सो राइट साइड से काउंट करके सबसे छोटा नंबर आ रहा है, सो विल count from right hand side. Okay, one more thing which I forgot to tell you all was, जब भी functional group is on the first carbon atom, you need not write. So 1 chloropentan को सिर्फ chloropentan भी बोल सकते हैं। Okay, that is also okay. So जैसे mathematics में 1 multiplied by x को हम लोग सिर्फ x लिखते हैं, right? जब भी x लिखते हैं, it is assumed क्या वो 1 से multiply हुआ है। Similarly यहाँ पे भी whenever the functional group is on the first carbon atom, you need not show that. सिर्फ क्लोरोपेंटेन बोल दिया, so it is understood that it is 1 क्लोरोपेंटेन। दूसरा ऑप्शन क्या है? ये जो एज वाले है फर्स्ट कार्बन एटम्स है, उसपे सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा, बट जो सेंटर में है कार्बन एटम उस पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है। इन दैट केस इट विल बिकम 2 क्लोरोपेंटेन। सो दीज वर द टू structures that you were asked to draw, and these were the two IUPAC names that you were asked to write. Okay,
So quickly, let us see the summary. So what are the 4 types of reactions we have seen? We have seen combustion reaction and jalna. Okay. So whenever combustion reaction takes place for carbon compounds, it is going to get combined with oxygen in the air, and it is going to give you carbon dioxide, water, heat, and light. Then we had seen oxidation reaction. Oxidation reaction is what? Combining with oxygen. Okay. So ethanol will combine with oxygen in the oxygen in the presence of an oxidizing agent. So क्या oxidizing agent? KMnO4, potassium permanganate is an example of oxidizing agent. So oxidizing agent और थोड़ा heat भी लगता है. Okay. So once you give oxidizing agent and some heat to ethanol, it is going to combine with oxygen. Okay, that's oxidation reaction. Addition reaction. Addition reaction takes place only for unsaturated hydrocarbons, right? Example ethene. So ethene में जब addition reaction हो जाएगा, this can also happen with 3 different atoms. Okay, it can happen with bromine, it can happen with iodine, or it can happen with hydrogen. इन तीनों से भी addition reaction हो सकता है, but ये सिर्फ unsaturated hydrocarbons के साथ होता है. So ethene is an unsaturated hydrocarbon. So जब भी वो एडिशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं, ये जो डबल बॉन्ड है ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड बन जाता है. सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बिकम saturated hydrocarbons in addition reaction, which is nothing but combination reaction. Okay, this is the example of hydrogenation. हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, so it is an example of hydrogenation. उसके लिए तुम्हें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, वो निकल हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है. फाइनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें कोई ना कोई एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स निकल के कोई दूसरा चीज वहां पे ऐड होने वाला है. ओके, सो दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. हियर इन द केस ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के क्लोरीन ऐड हो जाएगा. ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. So this is an example of substitution reaction. Okay, so that's the summary. Make sure you're copying this, and from this one particular chart you can explain the entire learning session for today through example. So that was our objective, right? So these are the new words we learned today. Combustion यानी burning. Similarly, ignite का मतलब ही burning है. Okay, both of them mean the same. Vicinity यानी आसपास में, nearby. Endo means inside, exo means outside, thermic means heat. LPG का full form है liquefied petroleum gas. अल्कलाइन मतलब बेसिक. ओके, बेस एसिड का ऑपोजिट, एसिड बेस जो होता है. हाइड्रोजनेशन यानी रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन गैस. इनर्ट, इनर्ट यानी इजीली रिएक्ट नहीं होता. रीएजेंट्स यानी रिएक्टेंट that is added to another substance. So these are the new words that we have learned today. Just check whether you have accomplished today's learning objective or not. What was learning objective? That you should be able to explain using examples chemical properties of carbon compounds. Okay, combustion, oxidation, addition, and substitution. वो जो last summary का table मैंने दिया, just if you by heart that very well, you should be able to explain the entire learning session of today. Okay, so that's it for this learning session. I hope you understood everything, and we'll see each other in the next one. Okay, till then, bye, peace, have a nice day.